जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय जय फूले जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय सावित्री जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय समल्लो जय भीम, जय भीम, जय भीम, अरे जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, अरे जब तक सूरज चांद, जय 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 भीम, अरे जय समल्लो जय भीम, अरे जय जय फूले जय भीम, अरे जय सावित्री जय भीम, बिरसा मुंडा जय भीम, अरे जय 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 भीम, अरे जय समल्लो जय भीम, अरे जय समल्लो जय भीम, आवाज उठाओ ना बराबर, अरे जय समल्लो जय भीम, अरे जय 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 भीम, अरे जय 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 भीम, जय भीम।
બદલ હાજર રહેલા તમામ મહાનુભાવો, શિક્ષણગણ, મારા વાલા મિત્રો, બધાને મારા તરફથી જય ભીમ. આજે આપણે એક એવી વિભૂતિને યાદ કરવા એકઠા થયા છીએ જેણે ભારતના ઇતિહાસની દિશા બદલી નાખી. જેમના હૃદયમાં કરોડો વંચિતો માટે કરુણા હતી અને મસ્તકમાં આખા વિશ્વનું જ્ઞાન હતું, એવા બૌદ્ધિક ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર 14 એપ્રિલ 1851 રોજ જન્મેલા આ મહામાનવે સાબિત કરી દીધું કે માણસ જન્મે છે ગમે ત્યાં પણ પોતાના કર્મો અને જ્ઞાનથી મહાન બને છે. મિત્રો, બાબા સાહેબનું જીવન એટલે સંઘર્ષની જીવંત મસલ. નાનપણમાં તેમણે જે અપમાન સહન કરવું પડ્યું, આડછેદનો સામનો કરવો પડ્યો, જેનાથી તેઓ હાર્યા નહીં પણ વધુ મજબૂત બન્યા. તેમણે જોયું કે ભારતીય સમાજવાદી રોગથી પીડિત છે અને તેનો ઈલાજ માત્ર શિક્ષણ છે. તેમણે આપણને 3 અમૂલ્ય મંત્રો આપ્યા: શિક્ષિત બનો, સંગઠિત બનો અને સંઘર્ષ કરો. બાબા સાહેબે માત્ર એક જ્ઞાતિના નેતા નહોતા, તેઓ સમગ્ર રાષ્ટ્રના નેતા હતા. જ્યારે ભારત આઝાદ થયું ત્યારે દેશને એકતાનું તાંતણે બાંધવા તેમણે ભારતના બંધારણની જરૂર હતી. ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીના અધ્યક્ષ તરીકે તેમણે રાત દિવસ મહેનત કરીને વિશ્વનું સૌથી શ્રેષ્ઠ બંધારણ આપણને આપ્યું. તેમણે સ્ત્રીઓને સમાન અધિકાર આપવા માટે હિન્દુ કોડ બિલ રજૂ કર્યા. મજૂરોના કામના કલાકો ઘટાડ્યા અને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા RBIના પાયા સ્થાપ્યા. આજે જ્યારે આપણે તેમના શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ ત્યારે આપણે માત્ર તેમના ફોટાને ફૂલા નથી ચડાવતા, પણ તેમના વિચારોને જીવનમાં ઉતારવાના છે. સાચો જય ભીમ એ છે કે અન્યાય સામે અવાજ ઉઠાવી અને સમાજમાં ભાઈચારો ફેલાવે. તેમણે કહ્યું હતું કે હું એવા ધર્મને માનું છું સ્વતંત્ર, સમાનતા અને ભાઈચારો શીખવે છે. ચાલો આપણે પ્રતિજ્ઞા લઈએ કે આપણે શિક્ષિત બનીશું, એક એવા ભારતનું નિર્માણ કરીશું જ્યાં કોઈ નાનું કે મોટું ન હોય. છેલ્લે એટલું જ કહીશ કે હું નમું છું એ શક્તિને આખા દેશને જગાડ્યો. હું નમું છું એ શક્તિને જે આખા દેશને જગાડ્યું. દક્ષિણ ભારતનું ભાગ્ય એણે જે બંધારણ બન્યું. જય ભીમ. को 2 मिनट એટલે કરે ચોણું પેતો કે પાંચ કદાચ એવર છેલ્લા 10-15 વર્ષ 17 વર્ષથી આંબેડકર જયંતિ ઉજવ્યું હતા, પણ મુકે ખબર હે કે 1972 કે 73 આ ન બોલતો 72-73 થી જ્યારે કચ્છ में ખબર है नहीं बाबा साहब जी ત્યારે આખે કચ્છ में बाबा साहेब आंबेडकर प्रचार समिति करे અને આખે કચ્છ में आंबेडकर जयंती उजवंदा એટલે લગાડે આજે પાકે નીચે સન્માન સાથે આવની મણી કે પ્રેમજી ભાઈ કે એકલો સોનો 2% પાકે સોનું કપે એની જે એનો વખત જે વિચાર એનો વખત જે પરિસ્થિતિ અને એડી પરિસ્થિતિમાં જ્યારે બાબા સાહેબ આંબેડકરજી જન્મ જયંતિજી ઉજવણી કહેતા હોય ત્યારે ખરેખર એની કે ધન્યવાદ એટલે આદરણીય વડીલ કે છેલ્લા કેટલા વર્ષોથી અને એટલા વર્ષે પાછળ પણ એની કે યાદ જ કેણ આપે કે એ उन समय में કેમ રીતે બાબા સાહેબ આંબેડકરજી જન્મ જયંતિ ઉજવી દેવા અને કોર એની કે પડકારવા એની વિશે ટૂંક में प्रेमजी भाई पातारिया पूर्व सरपंच भारापर अने असांजा हुते खंभरा में जो को वेलजी टाटा मत्यादेव समिति उनीजा मुख्य आधार स्तंभ पण जे हुते सेवा भजवाईंदा अने समग्र समाज में समाज नेता वडा जो को पण समाज की जवाबदारी एडी जवाबदारी निभाई था तने हूँ प्रेमजी भाई कारण के वड़ी लई पण हमेशा मुके एनी जे छोकरे जेटलो अने मित्र जेटलो प्रेम देणो એટલે પ્રેમજી ભાઈ કે જોતો છે કે અહીં બહુ શબ્દ જોયો બાબા સાહેબ વિશે અને સમાજ વિશે પણ. થેન્ક યુ. मिर्जापुर आंबेडकर नगर जे अंगण में आज ने मुझे भगवान जो एकड़ो नवे मंदिर जो सर्जन थयो जन समय के अंदर बाबा साहेब आंबेडकर विશે जन्म जयंती उजवेला करे भुज जी अंदर एकड़ी रेकड़ी मथे लकड़ी की खुर्सी रखी तेनी पीवीसी पैदा नहीं लकड़ी की खुर्सी हथगाड़ी मथे रखी एनकी अंदर 4 केड़ा जा पन बधी अने बाबा साहेब अमर रहो जा नारा लगाए अने जने भुजनी जन्म जयंती उजवेला वेंदो हशे तने मुके ई थीदो के प्रो ई एकल दोकल ज रहंदो छे परंतु आज हेतरा वर्षों के बाद
આજે જેને ગલી ગલી જે અંદર बाबा साहेब आंबेडकर जो नाम गुंजी रहे હોય पांची नजर के सामने हेवर घણા બધા વક્તા છે નહીં ત્યાં કે बाबा साहेब ही करेव्या ही करेव्या ही करेव्या ही करेव्या मुके लगे तो कि दरेक व्यक्ति के बाबा साहेब जो जीवन कवन जो को है ये हने मोटे थी हूं तो परंतु साहेब उन परिस्थिति के थोड़ो हजी पण नजर समक्ष रखीने उन हालात के भूले जो ना कारण के दिवस हजी पर पाला करे सुदृढ़ ने सारा नहीं कपड़ा दिवस सही हजी पर अगर जो कोई वंचित ने दलित समाज जो व्यक्ति मेघवार अनुसूचित जाति ओबीसी कोई व्यक्ति समझते हुए कि हूँ आज पर आजाद अहिया तेने मगज में जो विचार काढी लेजो हजी पर पाणे आजाद नहीं हूँ बाबा साहेब आंबेडकर उन परिस्थिति के अंदर चांडोला तलाव के अंदर पानी ला करे अंदर कि जेते एकलो कुत्तो भी नहीं करे अने गला डूब पानी में उभी करने पानी पी सके जे अंदर गधेड़ो वेची सके इन के अंदर मानव के पानी पीते जो अधिकार नवे ते विचार करे बाबा साहेब जे जीवन मते केड़ो वीत्यो होतो અને એ વ્યક્તિ જ્યારે હોતે વ્યાવા ત્યારે નક્કી કરે ગણાવા કે મુજો જલ તેજ પૃથ્વી વાયુ આકાશ પંચ તત્વ જે જોકો શરીર है इनके कदाच मुझे विरोधी कदाच कट्टर विरोधी मुके कदाच पाड़े विद्वान तो पण आऊं आजाद अमर ऊ आत्मा यहाँ के कदे मरे वरो नहीं ई पंच तत्व जो कदाच शरीर चलतो आऊं न चलतो અને ઉન સમય के अंदर बाबा साहेब ला करे कदाच शब्द हुंदा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि देखना है छोर कितना बाजू एक कातिल में है अरे कट्टरवादियों क्षेत्रों विरोध करणो है करेगनो बाबा साहेब छडे पण जिते पण जो कदम मड्या ओते ई कदम कदाच कपाई ने पण पाछो न खणे जी नेम से आगळ वध्या होय आज पण बाबा साहेब जे इकडे विचारे मते पण नरेला वनो तो बाबा साहब हयात हुआ इन करता तो मृत्यु के बाद इनी जा पुतड़ा जो कोई एतरा हिंटाणी आखी में खुची रही कि जो को कट्टरवादी आज पण जो जोरदार विरोध करिए था खरेखर बाबा साहब के बुलंद करे दे बाबा साहब नी जी दीकरी उन समय के अंदर चिकित्सा आरोग्य की चिकित्सा जो कोई नार पारखे ने दूर थी वैध दवा दिए एड़ी हालत अने एड़ा संजोग हुआ तरे दीकरी जो को इनके सारवार पूरी न मिली अने जड़े मृत्यु पामी न बाप एन समय के अंदर लाश के अंतिम विदाय ला करने खड़ी होने की कोशिश की पर लंबे समय सुधी छोकरी की लाश पई हुई पूछा क्यों कि रमाबाई परिस्थिति करो है तो इचे खमो थोड़ी बार अंते ई बाबत सामी आई कि एन दीकरी के मथे ओढ़ाड़ेला करे कफन न हो एन दीकरी के मथे ओढ़ाड़ेला कफन न हो रमाबाई फिर जे शरीर जे ओकरो छेड़ो फाड़े करे अने दीकरी मथे कफन ओढ़ाड़्यो तने जी लाश के विदाई मिली सके तने बाकी चलो गपे तो कि केम भूले ने छाती तुच्छ शहीदोनी कि जेने निज रक्त थी दीवाओं ने जगमगाव्या छे पण उनी जी जीवन में जानी कि एक सबक मेळव्यो युवा ने क्या इतनो चाहतो कि बंधु आपघात करे जा हताशा ने निराशा के खंखेरे वेचो एनी विचारे के पड़ता रख्यो અને ऊ जो को बुलंदी के सरकेणीए ई नजर सामे रखी करे अगर जो कोनी समाज जो हजी पण पाके पाजा अधिकार मेळवेला करे घणे बधा जंग लड़े जाई અને એને जंग जो कोई मसीहा बनी करे અને समाज में जो आगळ वधतो होय दाखला तरीके कोई नरेशभाई जोड़ो व्यक्ति कोई जुआन आगळ अतींदो होय तेन के पाके चोणो कपे कि हे नरेशभाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है तेरी नेम साथे जुआन आगळ वधो हताशा ने निराशा के खंखेरो आपघात थी विचारे के पड़ता रखो व्यसन मुक्त जीवन बनाए करे अने समाज के अधिकारी ला करे उठो जागो अने मंडी पड़ो जय भीम जय हिंद लाखों करोड़ों
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी समाज, लघुमती समाज, करोड़ों वंचित समाज जेके पिंकी हिकड़ी कलम थी इन देश के आजादी ॾिनो पहिरियां डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर जो अज जन्म दिवस है ते इन विषय बोलणु इनला करे कदाच आखी रात लगे अने रात पण ओછી थी कि जिन व्यक्ति बेटे 32 डिग्रियों કેટલું એટલે શાયદ કદાચ પાં વધીને 12મું પાસ કે ગ્રેજ્યુએટ થયા ઊંધા છે કદાચ અનુસાર ડબલ ગ્રેજ્યુએટ થયા ઊંધા છે પણ કલ્પના કરો કે 32 डिग्रियों इनमें 4 पीएचडी की डिग्री કેટલું आज एकड़ी पीएचडी की डिग्री केणी वे तो आप ही वने मात्र के पण थकी वने मात्र पण कि छोरे के કેટલો ભણવાનું तो ये कल्पना करो कि एड़ी परिस्थिति में 32 डिग्री ने इनमें पण 4 पीएचडी की डिग्री आज थी 76 वर्ष पहला इन देश के आजादी मिली अने इन देश में बंधारण लागू थयो अने तेनी परिस्थिति में अने शिक्षण की आज की परिस्थिति में आज पाटी समाज में शिक्षण आयो अने कदाच पण वधीने गुजराती एक थोड़ी घणी हिंदी ने पण कदाच वधीने थोड़ी घणी इंग्लिश समझी सको कदाच पण कल्पना करो कि ये महामानव 9 જેટલી भाषा जो ज्ञान धराईंदा 9 જેટલી भाषा जो कल्पना तो करो हिंदी पर पात ठीक है फिल्म ने दी सीरियल ने दी એટલે પાગાતે पण 9 भाषा जो ज्ञान 32 डिग्रियों 4 वखत पीएचडी करल અને ઈ મારું હેડુ ડિગ્રી કિની કરીને વિદેશ में जा गिनी કરીને જેર પાછો વડોદરા છે કારણ કે સયાજીરાવ ગાયકવાડ इनके शिष्यवृत्ति दिनों ने अंजलि थे होते भणेला व्यावा અને ઈ ભણી ગઈને ફરી પાછો એટલી ડિગ્રી ફરી કરીને જે ફરી પાછો વડોદરા में ઈ અભ્યાસ કેલા કરે અચીંદા में તેલ પણ હોતે ઓનો समय में इनके फाइल पर फग्या કરીને डिनी माचे फाइल हाथ में न डिनी माचे बाबा साहेब के होते वडोदरा में इनके वेला करे मकान पर कोई भाड़े न दे विचार कल्पना तो करे हुई बाबा साहेब थकी हरी कंटाड़ी करे अने बाबा साहेब होते एकड़े वृक्ष के नीचे होते संकल्प क्यों कि अगर आओ एडी 32 डिग्री की नहीं आयो यहाँ 9 भाषाओं जो ज्ञान है मुके 4 वक्त हम पीएचडी थे यहाँ अने ते छता अगर मुझी परिस्थिति हेडी होती तो मुझे इन भारत में करोड़ों शोषित वंचित पीड़ित समाज की कुल होती कल्पना तो करे साहब बाबा साहेब अगर धारे बाबा साहेब अगर धारे हो तो उस समय में पण नौकरी छड़े करे ने किते अमेरिका का लंदन हले रहा पोते सारी सारी जगह इनकी नौकरी मिली हुई इनका बच्चा जो गुजरन चले सके पर संकल्प क्यों कि एडी परिस्थिति में अगर आओ इतने भणल घणो लईया छता पण अगर मुझी एडी परिस्थिति है तो आखे देश में करोड़ों शोषित वंचित पीड़ित गरीब समाज है उन जो केर थींदो अच्छा पांचे पाड़ोसी जो पण ध्यान न रखदा हूं कल्पना तो करो कदाच हाणे तो वरी समूह लगन थई गई समूह लगन में पा विया करे छडी कोला खबर है के अलग रीते विया कर्યું तो पाके पंजा सगा संबंधी काका मासा मळे कपे पर समूह लगन एकड़ो एड़ो थई गयो है के इनमें क्यांथी जरूर न होय
है कि ना केजी जरूर नवे समूह लगन में ठीक है ना लगे बता सी रुपया तो 5100 रुपया के 11000 रुपया देने जिन फीट એટલી જ હોય ને छत एडी स्वार्थी मानसिकता पाजी થઈ રહી है અને ઓલો समय में डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर ई विचार के कदाच आऊं हारी वेंदो से तो आखे देश की करोड़ों शोषित वंचित पीड़ित समाज जो केर थींदो धन्यवाद ये संकल्प क्यों અને સંકલ્પ क्यों इनके पाछળ परिस्थिति को सही पाके खबर है जो उर्वशी बेन भेड़ा जो को गाल क्यों पाके आज पांचे खींचे में कदा 100 200 500 2000 जी नोट है ना तो ये पांची बां भेड़े के खबर नहीं थी कि एड़ो विचार पर के आयो तो ये डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर का आयो किन मथे तो प्रॉब्लम ऑफ रुपीस ये किताब लिखियो અને એ કિતાબ મતે ભારત આખો રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ની સ્થાપના કેન્દ્ર હોય તો અહીં કલ્પના કરો કે એમને કેટલી બુદ્ધિ હતી એ કેટલો વિચારશીલ મારું હતો આજે પાવતે પાંચે ઘર में વિનોદા નળ ચાલુ કર્યું એટલે પાણી નીકળે પાંચે ઘર में રસોડે में પણ પાણી નીકળે पर कदे मुझी मां बहनों विचार क्यों कदे मुझे युवान विचार क्यों कि जब महाराष्ट्र के महाड़ में चावतर तलाव में उते कुत्ता मैना जानवर उन तलाव में पानी पी सके पर मेघवार समाज जो मारू होते पानी न पी सके शायद कल्पना तो करे आई जो को पानी पियो था ये पण डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर के आभारी है आज जो को पानी पियो था ना ये बाबा साहेब के आभारी है ऊपर बाकी खबर नहीं जिन व्यक्ति के स्कूल में पण इन जो घरों पर पानी जो घरों पर बार आवे अने बारा रही करे ने ये अभ्यास केंद्र हुए तो केंद्र मतलब के पानी जो अधिकार पण बाबा साहेब आंबेडकर पाके देनो शिक्षा जो अधिकार पण डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर देनो आज पण गाड़ी घोड़ा बंगला स्वाभिमान से जब जीवता ये डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर थकी आयो ने का कोई जो भाई ओले पुत्र साहेब ही चैलेंज करते चाहतो गमे એટલી ગાલી કરી હું गमे ने तो एनी कने माथा पछाड़े होई देवी देवता वाटे आ कोई विरोधी नहीं आ पर ये एक सनातन सत्य है कि अगर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर ने हुआ इन देश में बंधारण न लिखो तो गमे थी गमे हो पर आके कोई अधिकार न मिले हुआ पान के सामने को क्या सी पान के सामने जय भीम क्या सी मात्र 14 एप्रिल पूरतो जय भीम क्या सी मात्र 14 एप्रिल पूरतो स्टेटस रख्या सी इंस्टाग्राम में रख्या सी पोस्टर रख्या सी बेदी थयो એટલે પૂરો बाबा साहेब जो को विचार रही અને એ વિચાર પણ કદે પાજે મન में પાજી समाज में कदे पर नगनी सकिया છે बाबा साहेब એટલે સુધી क्यों कि कदाच सारी चंपल न वे सारा गोगल्स न वे सारा कपड़ा न वे कदाच हेकड़े तक जो आके धीमे जो पर न मिले न तो इंसान मरी नहीं वनो पर आजे बच्चे के भणाई जा भणे घणे ने होशियार बनाई जा અને इनके पास जो कि शिक्षा वो शेरनी की दूध वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा क्यों कि अगर शिक्षित बनता पाजा दीकरा ने दीकरी बड़ी गई में होशियार बनता तो कते कलेक्टर बनता कते आईपीएस बनता कते मामलतदार बंदो कते टीडीओ बंदो कते पीआईसी बंदो कते पीआई बंदो અને પીએસઆઈ પીઆઈ મામલતદાર ટીડીઓ કલેક્ટર જે ભલી કરીને દી ચેમ્બર में बैठो હતો ને ત્યારે અન્ય સમાજ જો મારું અધિકારીને દરવાજો ખોલી દે ને એનથી પહેલા અહીં ચોતો કે પરમાર સાહેબ હતા મહેશ્રી સાહેબ હતા રાઠોડ સાહેબ હતા મારું સાહેબ હતા એ સાત ચલા ગઈ છે કે જો पिएगा वो दहाड़ेगा
પણ પા માત્ર ને માત્ર 14 એપ્રિલ સુધી સીમિત રહી ગયા છે એને ગાલ તો કે દુઃખ લાગે તો બાબા સાહેબ આંબેડકર ધોકો પકે અધિકાર ન હોય એના અધિકાર જો પા પૂરેપૂરો અહીંયા ન્યાય કરી શક્યા છે જો ફાયદો ન્યાય ઉપાડી શક્યા છે માત્ર એટલે દી પૂરતો જ પાસ સીમિત રહી શકો હતા કોણ કર્યું હતા અહીં વિચાર કરો કે दौड़मेजी परिषद लंदन में साहब जो दीकरो मरण पथारीए અને રમાબેન જી પ્રેમજીભાઈ પાતારિયા સાહેબ ક્यों ગોળમેજી પરિષદ એટલે કોરેલા કરે तो गौड़मेजी परिषद वो अकेला करे कि दलित समाज के अनुसूचित जाति समाज के उन समय में 2 वोट देने जो अधिकार वो एकड़ो वोट पार्टी जो को वे भाजपा कांग्रेस जो को पार्टी में जो उम्मीदवार वे उनके देने जो અને 2 वोट जो अधिकार एड़ो वो कि अनुसूचित जाति समाज निकी करे कि ही ऐसा जो उम्मीदवार है ही वो अधिकार हुआ अरे हमला करे जे डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर गौड़मेजी परिषद में लंदन जब गया थे तेरे जो छोकरो मरण पथारी है वो रमाबेन ने के चेता कि साहब छोकरो मरण पथारी है ना मीटिंग में होता ते भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर साहब कहता कि कदाच इन गौड़मेजी परिषद में कदाच आऊं नहीं ना तो मुदा करोड़ों अनुसूचित जाति समाज वोट के अधिकार थी वंचित रही वेंदा साहेब हमला करे तू छोकरो एनी जो मरण पामे तो अने बाबा साहेब आंबेडकर गौड़मेजी परिषद में होते वनेता अहीं कल्पना करो कि मत जो अधिकार पण भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर भागे देनो अने पाको कर्યું ता एवं चूंटणी है के ना एवं चूंटणी है અને ચૂંટણી એટલે નક્કી કેતા કે આ મેઘવાર સમાજ છે તો એની કે કોર કપતો તો મટન વેરી ખાલી ફામ દઈ દીયા વાંધો નહીં હશે કોર ચોંતા ભોખ લાગે તો મુકે ઈ ચોંતે પણ સમાજ એટલે મુકે ચોડું ખપે તો તેને સમાજ કે ખાલી ફામ દઈ દયો વાંધો ને ચિંતા ન કર્યો સાજી વેરી જો કોઈ આઈટમ એ દઈ દયો તો पंचवारे भाड़ में गया भाजा साहब कल्पना करो कि जो को इनको दीकरो जोन जो दीकरो एना अधिकार ला करे होमे वधे अने पाकी अधिकार मिल्या वोट जो अधिकार मिल्यो अने 5 रुपया सी अजे 5 चूंटणी अचे એટલે કોઈ પણ ઉમેદવાર હોય ઈ પાકે खारी बात में खरीदी की नहीं विचारता करो दारू की बोतल में खरीदी की नहीं है दारू की बोतल में कुथरी में खारी बात में पाके खरीदी की नहीं आई पा एड़ो खुला नची सको कि असा के असा जे फरिये में असा के रुपयो नतो खपे पर असा जो उम्मीदवार एड़ो हुनो खपे कि असा जे सुख दुख जे प्रसंग में असा जे अंडे अत्याचार जे प्रसंग में असी फोन करियो तू अते अचे तो तू असा जो उम्मीदवार एड़ो पा खुला नथी सको अजे એટલા મળે अधिकार जे के पाके देनो छता पा एमला करे को करे सको बा तो की नता करे सको बो दुख साथे ચોણું ખપે તો કે એડી વિશાળ સમાજ હે અને 14મી એપ્રિલ વે એવો પણ કદાચ આને દાંડિયા રાસ હે કરવું હોય તો સત્ય એવો દાંડિયા રાસ હે એવો તો સમાજના બુઝુર્ગ બુદ્ધિશાળી સમાજના સૌ આગેવાન તે પણ દાંડિયા રાસ હે તો લગભગ તે મુકે લાગે તો પગ રાખેલી જગ્યા નહીં રે પાવતે ये करो सत्य सत्य अजे 5 दांडिया रस पूरता सीमित थी गई साहब अजे कोई पण यात्रा धाम में कोई पण पांचा प्रसंग में એટલે दांडिया रस અને એનમે યુવાન છોકરા છોકરીઓ સાહેબ એડા કડે અહીં એડા કડે मोटिवेशन जे प्रोग्राम में व्या कटे समाज के मोटिवेशन थी समाज ला करे थिए इनला करे व्या पण कड़े न आया છે અને इनमें पण पाछो रिलायंस वाला करो के और 250-300 रुपये में जियो फ्री में दे धना धन
જીબી જેટલી મજા આવે અનલિમિટેડ પાકે વાપરેલા મળે અને સાંજે 6 વાગે પાછળ 5 ઉતરી પી કરીને 2 જણા ધન અને પોલીસ એ કહ્યો કે સમાજ જે નડે વડેજી ક્યાંથી પણ પરવા કરે વગર સોશિયલ મીડિયામાં પાણી કે ઉતારે પાડ્યું તો સાહેબ આ કે મણી કે ખાસ मुझे नम्र विनती है कि समाज ला करे जो को कहतो है नहीं कम से कम दो की न तो उनके उतारे न पारे आउट की न थी सके तो चुप रहो शास्त्र उनके पर एम रीते पानी के बदनाम कहता सी तो ये आगर वही करने कोण करे सकतो पाके तो की ने सांजी 6 वागे એટલે પા પણ રિચાર્જ થઈ વિનો એટલે કો ગમે એની વિરુદ્ધ में ગમે WhatsApp માં પા લખી દીધો લખો તા કે નતા લખો ગમે એટલો સારો પ્રસંગ કર્યો वो भले 15 रुपया का 500 रुपया पर उनमें प्रसंग में न दे पर मैसेज पहलो ई के नेरिया भले हिसाब तो दीनो पोंदो तोजा कितना ही मुजा भले नहीं आऊं तो समाज जो ही है ना इन मानसिकता में जा पाके मणि के दूर निकलना पोंदो समाज में जो को दूषण है इन दूषण में जा पण पाके दूर थीनो पोंदो आज समाज में कितना युवान इनकी बेदरकारी जे लीधे के कहते न कहते इन व्यसन के कारणे कहते के एक्सीडेंट में वन्याता था साहब बहुत दुख लगे तो कारण के आजा मायतर आके इन समय ला करे नता आके वडा करिए नता उछेरी आके मायतर के आशा अपेक्षा है कि असा जो छोकरो भली घणी ने कहते नौकरी मिलती अथवा वडो थी तो कि कमकाज कहतो तो असा जो बुढ़ापा जो सारो थी तो पण कहते ने कहते इन व्यसन के कारणे एक्सीडेंट थिया था ने एक्सीडेंट के कारणे पाजी विच में यही समाज जा युवान जो को हल्याता होने गत दुख लगे तो उनके इनी मणि मायत्रे के साथ साथ युवाने के मुझे खास नम्र विनती है कि इन व्यसन से दूर हो जा समाज में शिक्षित पा बनो इनला करे पा नेम केदा सी हाँ मुझे हर एक प्रसंग में चाहतो અને એવોર્ડ પણ ચાહતો કે અમદાવાદ ખાતે 50 જેટલા દીકરા દીકરીઓ પોતે રહી શકે અને એવોર્ડ લોકો રાજ્ય સરકાર કેન્દ્ર सरकार जी जितनी પણ ભરતી होती थी इनमें बिन सचिवालय में मामलतदार में तालुका पंचायत है तलाटी है टीडीओ है अलग अलग विभाग है जी जो को वन विभाग है પછી अर्धलश्करी दल है लश्कर है એની જે જેટલી પણ ભરતી होती थी और वो पुष्कळ प्रमाण में पुलिस की भर्ती पण होती थी અને इनमें એની કે તૈયારી કેલા કરે સારી એકેડમી લા કરે કદાચ એની કે હોતે અમદાવાદ એની કરને તૈયારી કેણી હતી તે એડી 50 જેટલી જગ્યા હોતે પા રખ્યા હે કે જતો તો રહી સકે ખાઈ પી ફ્રી में કોઈ જાતનો ચાર્જ ન પણ સમાજ જા દીકરા ને દીકરી ભણી ગણીને આગળ વધે એટલે આજથી 15-20 વર્ષ पहला पा बैठा सी कि समाज में કેટલાય તાલુકા પંચાયત હોય મામલતદાર હોય પોલીસ ખાતો હોય वन विभाग હોય इनमें पाजी समाज जा कर्मचारी मिलता हुआ आने लगभग छेला 2-4 वर्ष थी लगभग मणे रिटायर थी गया पर इनकी भर्ती में दुख साथे थोड़ू खपे तो कि नवा नता अची सके अञा हाणे तो पा आर्थिक रीते पण सधर रही सामाजिक रीते पण सधर रही आके रेजी व्यवस्था करे दियो ता खादे पीदे जी व्यवस्था करे दियो ता अरे फ्री में व्यवस्था कर दियो ता तो को हाणे तो पाके भणी घणी अने एन समाज जो ना रोशन केणु खपे दोस्त साथे कोण खपे तो रमेश भाई के अजीती 15-20 वर्ष पहला कोई पण पुलिस स्टेशन में हो जाओ એટલે ઓન पुलिस स्टेशन में लगभग 53 मेघवार समाज जा पांजा कर्मचारी वे आज कोई पण पुलिस स्टेशन में हो जाओ ना तो दोक साथे तोण खपे होते कदाच वधीने 4 થી 5 जणा ही पांजा पुलिस की एडी वडी भर्ती हते 1400 के 2000 की भर्ती हते इन भर्ती में जेर छेले भागे रिजल्ट आते हैं मोबाइल में इनकी पीडीएफ हते तर पाके बेताला चश्मा लगे ने नेनु खपे के इनमें मेघवार केटला साहब ही वास्तविक परिस्थिति है એટલે એવો કોઈ પણ પરિવાર है એડી કોઈ પણ પરિવાર है
કે જેનો દીકરો કે દીકરી ભણે એમાં હોશિયાર હે પણ એની આર્થિક પરિસ્થિતિ અગર સારી ના હે એને કે ભણવું હે એને કે આગળ ભણવું એને કે આગળ અભ્યાસ કરવું હોય પણ એની પરિસ્થિતિ સારી ના હે तो इन परिवार के मुझे खास नम्र विनंती है कि आ जो दीकरो आ जो बा नरेश महेश्वरी ये हाजर है इनला करे कदाच समाज में भीख मांगनी होती तो उनके चौथा सी कि साहब ही दीकरे के पागल अज आर्थिक रीते मदद केंदा सी एकड़ो सोने 2% ई समाज जो ना रोशन केंदो એટલે એના કોઈ પણ પરિવાર રહે અને કોઈ પણ પરિવાર કે કોઈ જાત જી શિક્ષણ ના કરે કોઈ જાત જી ચિંતા ન કરી આથી બેઠાઈ સમાજ જઈ મેડમ મોડી મંડળ બેઠો હોય ઇનલા કરે જેતે ભીખ માંગણી હોતી તો પાછી ભીખ માંગતા સી समय બહુ થઈ ગયો है अलवीरा मीर जो पण कार्यक्रम है અને એનકે સાથે સાથે જમણવાર જો પણ કાર્યક્રમ है इन आज जे कार्यक्रम में सौ उपस्थित रहा समाज सौ वरिष्ठ आगेवान ते उपस्थित रहा एनी जो मणी जो हाँ खूब खूब हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करिया तो जोरदार ताड़ी थी एमनो आपणे स्वागत करिए आलमभाई અને એમની આખી પૂરી ટીમ કારણ કે આલમભાઈ સાથેનો જેટલો ગ્રુપ છે એટલે આલમભાઈ કે નરેશભાઈ બધા તમારા ભાઈ જેટલા તમારા દીકરા જેટલા છે એક નરેશભાઈ તમે જે આપશો તે પણ મને આનંદ થાય કે મારા એક વાત ઉપર મારા એક નામ ઉપર આ દીકરી આવી જતી હોય થેન્ક યુ બેટા આલમભાઈ થેન્ક યુ ખૂબ ખૂબ આભાર એટલે આજે ભીમ રાસોત્સવ ભીમના ગરબા ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર અને આપણા મહાપુરુષોના જે ગરબા કે આપણે રંગત જમાવી છે એ બદલ બેન શ્રી અલવીરાબેન એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કારણ કે હું સતત કોન્ટેક્ટમાં પણ હતો કાલે લગભગ કાલે કે પરમ દિવસ દુબઈથી હા આપણે સાઉદી અરેબિયાથી આવી છે કારણ કે ત્યાં કને તમે જોઈ શકો છો કે હમણાં આ બધું યુદ્ધનો માહોલ છે પણ એની વચ્ચે મને આલમભાઈએ કીધું હતું કે નરેશભાઈ 14મી એપ્રિલના કદાચ 14મી એપ્રિલના સવારના પણ એ અમદાવાદ આવશે ને તો એ આપણા કાર્યક્રમમાં પહોંચી આવશે એની ચિંતા ન કરતા એટલે એના માટે જોરદાર તાળીઓ સમસ્ત અનુસૂચિત જાતિ સમાજ વતી આપણે એને તાળીઓથી ગડગડાટથી વધારવી જોઈએ થેન્ક યુ ખૂબ ખૂબ આભાર બેટા ખૂબ ખૂબ આભાર પૂરી ટીમને ધન્યવાદ
છીએ